go with it. Okay, I think spotlighting has been done. Just waiting. Sir? Yeah, anyone? सर आप पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? That would be towards the end because Okay. we'll need to work with it. So Okay, yes. sir. Okay. So चलो अब शुरू करते हैं आज का काम. अभी तक हम लोग ने बात किया था लिस्ट का. Now, if you remember, list was heterogeneous, dynamic, would allow duplicate, would allow index-based access, and the order which was maintained was on the basis of insertion. Super. Means list was everything what we could ask for. In fact, list है जिस वजह से Python में array है फिर भी कोई यूज नहीं करता. Why? Array had its own limitation कि एक बार बनाने के बाद ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है ना वर्क नहीं कर सकता. हाँ, उसका एक वेरिएशन और उससे ज्यादा तगड़ा चीज आ चुका है जिसे हम लोग numpy में सीखेंगे, जहां पे हम लोग उसमें array create, work, reshape करना सीखेंगे. But as such, Python में somebody asks you, does Python has array? Answer is yes, we do have array. Sir देखा नहीं, यूज भी नहीं करता कोई. Reason जहां उससे better और powerful चीज तुम्हारे पास है, which is a list. Why do you want to go back to something which had issues? So that is the basic phenomena जिसका आप बात कर रहे हो. That's a basic phenomena. People, is it spotlighted? Yes, no, just asking. Yes, sir. Yes, sir. Okay, because somehow my पता नहीं एक बार विंडोज अपडेट हो कि आधे कंट्रोल्स बंद हो जाते हैं. Because मेरा right click disable हो गया है. I'm not able to do much. Let me check sharing. Yeah, sharing I'm able to. But ठीक है, there's something. No issues. So now to work with people. अब बात करते हैं second tuple. Now what exactly tuple is capable? या tuple क्या है? Anything what this has to array can. एक मिनट वापस बोले. Anything what list has done, tuple can. तो सर बनाया क्यों? Easiest way to explain it, it is a static list. मतलब लिस्ट के सारे प्रॉपर्टी में दे दूं, पर उसमें से निकाल लूं तुम्हारा ability to be dynamic, and that's the tuple. ये खास याद रखना. मतलब सर सही है, सारे abilities निकाल के अगर आप सारे abilities देके सिर्फ static बना दो तो वो tuple है. हाँ, tuple के लिए हम लोग ब्रैकेट यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं. So the phenomena when it comes to tuple, the way it operates and the way we work is simple. हम लोग static list को tuple कहते हैं. Python internally सबसे ज्यादा उसे यूज करता है. Sir, क्यों? Now this is exactly the question which you would get. क्यों? I mean ऐसा चीज जो static है, जो एक बार बनने के बाद change नहीं होता. Why are we planning to use it more than anything else? And Python क्यों इसलिए ज्यादा यूज करता है? We say security. Sir, एक मिनट, security क्यों? Static. Because we say once created, not change. मतलब सर इसमें अच्छा बात क्या है, बुरा क्या है? Do you anytime get pissed during your teen or during your college जहाँ पे हुआ कुछ नहीं, but फालतू में आपके बारे में कुछ न्यूज आया था, या तुम लोग खुद भी कम नहीं हो, हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, यस करो. It's a human nature. What we do is we turn and twist things. Maybe एक कपल था, उन लोग का झगड़ा हुआ and no probably they break up. No, broke up as the normal series goes in college. किसी ने देखा फर्स्ट वर्जन थोड़ा स्पाइस अप होता है, पर पता नहीं इन लोग का कुछ तो हुआ रे, गर्मा गर्मी हो रहा था दोनों का. they walked off, I think हो गया broke up. ठीक है, point 1. Version 2 उसमें थोड़ा मिर्च मसाला. नो, वी आर इंडियंस, वी लव पुटिंग स्पाइसेस एवरीवेयर. सो अरे पता नहीं मेरे को न्यूज मिला है रे, बहुत गर्मा गर्मी हो रहा था, कुछ हाथ पे तो खींचने वाला था कोई एक दूसरे को, बट पता नहीं कुछ तो हुआ. दैट्स फर्स्ट वर्जन. सेकंड वुड बी थोड़ा एनहांस. अरे पता नहीं रे, कुछ तो था इन लोगों का, बहुत
उसके कोई 2-3 दोस्त आए थे, इसके भी 2-3 दोस्त था, ऐसा ग्रुप था ये. The last version would be exponentially, which will probably go back to faculties. फिर पता नहीं ट्रक भर के उसके लोग आए थे, बस भर के इसके लोग आए थे, ऐसे तलवारें खींच गई थी, बहुत झगड़ा हुआ और फाइनली दे why but can't help it, that's how, that's how we are. एक स्टोरी निकलता है उसका वेरिएशन एंड चेंजेस एंड ऑल. अभी one of the story which I still relate to, पब्लिक के पास कंस मामा होता है, मेरे पास कंस मामी है. आई मीन माय मामा इज प्रीटी गुड, बट ये मामी हम लोग के खानदान की मस्त कैरेक्टर है. I had a friend coming from Singapore. When I was in Singapore for a project, she had made it a point that she has shown me all the places. तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था, मैंने जब भी इंडिया आएगी, शी इज बेसिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेचारी का, ताइवान से है बट सिंगापुर में बोर्न एंड ब्रॉट अप. एंड हाइट इज हर एंटायर हाइट जमीन से लेकर ऊपर तक इज 4'11". यू कैन इमेजिन उसका साइज क्या होगा. इतनी, आई मीन स्क्रीन पे भी नहीं आई, बाजू में खड़े हो तो खत्म हो जाती है. शी केम टू मुंबई विथ her boyfriend and everybody. मतलब चल, I'll show you Mumbai around. मैं उनके पूरे गैंग के साथ हूँ, ऑल्दो उसमें ऐसे लग रहा था कि एक हाथी और बाकी ये छोटे छोटे पपीज है जो उसके साथ चल रहे हैं, बट ठीक है, टुक देम टू महालक्ष्मी बिकॉज दैट्स अ टेम्पल यू गो थ्रू. अब द सिनेरियो वाज वेरी सिंपल. अब वो इतनी सी जान, उसमें महालक्ष्मी में अगर गए होगे तो पूजा का थाली बहुत बड़ा मिलता है. So I was like, I'll help, don't worry. अब मैं पकड़ रहा है, वो खड़ी है, उसके बाजू में उसका बॉयफ्रेंड, ये वो सब खड़े हैं, मैं थाली दे रहा. 15 मिनट शायद मॉम कॉल्स अप. बोला मामी का फोन आया था. बोलो क्या हुआ. बोला पता नहीं क्या. वो बोल रही हो अमर किसी को हार पहना रहा है महालक्ष्मी में. बोला किसी को. बोला बोलो ची है साथ में, दे नो माय माय प्लेस दे हो, तो बोला ची है साथ में, मालूम तो है. वो मालूम है बट मामी तक ये न्यूज है. बोला छोड़ दे. टपल are maximum used in Python because once created, they have a surety that nobody can change the tuple. The biggest security feature why Python want to use tuple is it knows that apart from first creator, nobody can modify this. That is the biggest reason. So Python uses it maximum for internal operation because its security, and the security is once created, not changing. That is the reason Python को tuple बहुत famous अच्छा लगता है. No, this is the first reason why we work with it. This is the first reason why we operate and work with it. So this is what we are going through. Clear? पढ़ना समझा? ठीक है. मतलब सर इसमें फिर मेथड के नाम पे क्या है? मेथड के नाम पे डॉट इंडेक्स डॉट कॉम. सर क्या बात कर रहे हो, दो ही मेथड है. देख भाई, ऐड हो नहीं सकता तो ऐड इंसर्ट गया, रिमूव हो नहीं सकता तो डिलीट और पॉप गया. तो मतलब है मेथड के नाम पे क्या है उसके पास, काउंट और इंडेक्स. हाँ, वी डू एक्सेप्ट दैट टपल कैन बी लिस्टेड, कैन बी इंडेक्स. सर दोनों में फर्क 0 1 वाला इंडेक्स होता है. लिस्टेड तुम्हारा फॉर आई इन टी टपल एंड देन प्रिंट आई ऑप्शन होता है. तो इन शॉर्ट यस, ऑटो इटरेशन एंड इंडेक्स बेस्ड इटरेशन दोनों अलाउ करता है, बट इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. ओके, नाउ जस्ट टू सी दिस, जस्ट अ मिनट, क्रिएटिंग अ न्यू कोलैब. तो विल वर्क विद डे 4 में ही, बिकॉज सारे डेटा स्ट्रक्चर एक में हो जाएंगे, तो विल वर्क दैट वे. Just a minute. We have day 4 if I'm not wrong. Yep. Just opening it. Give me a second. Okay. So this is what we had. Let's go further. People.
You have this thing, right, people? Yes, no? Okay. Yes. So now going further, इसी में 4 and 5 modify कर देता हूँ, वापस चाहिए तो लिंक भी दे दूंगा. Reason I want data structure to be in one single, collab to work with. But still, if people don't have it, let me help you off. Okay, already shared collab link. So now if I talk about, let's create D 11, 22, 33, 44. We are sure by saying this, पक्का सर ये टपल है, 101% मैं गारंटी देता हूँ कि ये टपल है. ओके, चलो अच्छी बात है. So थोड़ा आगे का सोचते हैं, थोड़ा आगे का वर्क करते हैं. If this is tuple, let's try to check it. So if I run with the type, as you can see, it's a tuple. अब tuple मैंने कहा बहुत गरीब है, उसके पास ज्यादा कोई मेथड नहीं है. वेट करके देख लेते हैं. दो ही मेथड है. याद रखना, this reason why people would ask you in interview what are the common methods in tuple, because they don't have. Only दो ही है, लिख के रखना, याद रखना. काउंट इंडेक्स, और कुछ नहीं है इसके पास, और कुछ नहीं है. ना ऐड हो सकता है, ना रिमूव हो सकता है. नाउ द ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट्स. ओके, नाउ ट्विस्ट एंड टर्न्स. सर ठीक है, मतलब सर फॉर आई इन डी करके जैसे हम लोग नॉर्मल रखते थे, हम लोग लिख सकते हैं. यस, बिंदास, यू कैन वर्क विद इट. आप इंडेक्स वर्क कर सकते हो. फाई आई इन रेंज ऑफ len of your d coming into picture, you can put it down and you can say print can say at I d of I. Proper way. तो इंडेक्स का बात करेगा, यानी इंडेक्स एक्सेस मिलता है बस, और कुछ नहीं. ना रिमूव हो सकता है, ना वर्क कर सकता है. नाउ द ट्विस्ट एंड टर्न गोज विद, यू नो दैट डी इज सो एंड सो. दिख रहा है? अगर यहां तक चीजें समझी तो यहां से एक क्वेश्चन शुरू होता है. कैन आई गो अहेड एंड डू दिस? ये चलेगा, एरर आएगा, क्या होगा? एरर Not allowed. Overwrite हो जाएगा. Created cannot be changed. Overwrite होएगा ना new. Because we have clearly said changing tuple is not allowed. तो if I play this, तो थोड़ा धोखा जैसा लगता है कि सर आपने तो बोला था चेंज नहीं होगा, तो चेंज हो गया. Let's understand, we are not changing. सर मतलब ये चेंज नहीं है? नहीं, ये चेंज नहीं है, overwrite है. Change would have been if I create something like this. 10, 20, 30, 40 और फिर उसमें कुछ ऐड करता नहीं. तो इस केस में तो मैं डायरेक्टली ये कर रहा हूँ. तो सर ये चेंज नहीं है? नहीं, ये ओवरराइट है. इंटरनल मेमोरी से मैं पूरी तरह से हटा रहा हूँ और सिर्फ इसे वापस वर्क कर रहा हूँ. So remember, this is allowed because this is not causing a change. This is override. This is override. जो दूना डेटा है, जो ओल्ड डेटा है, वो पूरी तरह से नए टपल के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा या चेंज कर दिया जाएगा. तो सर व्हाट वाज द फैक्टर ऑफ स्टैटिक? जो एग्जिस्टिंग था उसमें मैंने कुछ चेंज किया? मैंने तो पूरा का पूरा लिस्ट ही चेंज कर दिया, सॉरी पूरा का पूरा टपल ही चेंज कर दिया. एंड दैट is a strength which we are talking about. Be very careful when you work with, be very careful when you operate. Clear with this concept? ये समझा सबको? Yes, no, waiting. Yes, People? sir. चलो. अब I'll tell you a very funny scenario. Tuple is static. Okay. Now, one thing which I am trying to show, be very careful because यहाँ पे मजा आएगा. If I say A is equal to 10, 20,
11, 22, 30. Now पहले तो थोड़ा शांति से समझने का कोशिश करते हैं सर वो क्या है लाइफ मतलब हुआ क्या सर नेस्टेड लिस्ट था ना ये नेस्टेड टपल जैसा कुछ है there is a list inside a tuple we need to understand this there is a list inside a tuple अब एक स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत प्यारा है एंड बेस्ट ऑफ लक वी से tuple is static जरा देख लो tuple is static but list inside tuple is still dynamic ये लिख के रखो क्योंकि इसके आगे मैं चीजें दिखा रहा हूँ and this is very very interesting to understand what am I referring to why सर तुम बोल रहे हो टपल स्टैटिक है हाँ और फिर बोल रहे हो लिस्ट इनसाइड अ टपल इज डायनामिक तो सर ये तो रॉन्ग हुआ ना नंबर वन दिस इज अलाउड बट इंटरव्यू में तुम लोग को ये स्टेटमेंट बोलने के बाद पूछा जाता है कैन यू प्रूव हाउ वी कैन नाउ से दैट टपल इज स्टिल स्टैटिक people open question anyone wants to try I think because number of element in list can be उसमें जो 11, 22, 23 है 33 है वो चेंज होंगे बट नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज सर लिस्ट नहीं रहेंगे एक के एलिमेंट कंसीडर करेगा इसमें वैल्यू कैन बी चेंज कौन से बहुत बढ़िया बोला दोस्त थोड़ा उसे फॉर्मल में वापस डाल मतलब बोल रहे हो बराबर है मैं ना नहीं बोलूंगा सिर्फ उसे थोड़ा रिफॉर्म कर जिससे कि परफेक्ट लगे सर जब इटरेशन करेंगे जब अपने को अंदर नेस्टेड लिस्ट मिलेंगी टपल के अंदर तो जब पता चलेगा वहाँ पे अपन जो ऑपरेशन है अपेंड जो डिलीट पॉप वो वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं ओके इंडेक्स फिक्स रहेंगे इंडेक्स फिक्स वेरी क्लोज टू व्हाट आई वांट तो वो तो एक ही एलिमेंट है सर ना उसको एक ही कंसीडर करेगा सर चेंज हो रहा है ना हमारा एलिमेंट के अंदर की वैल्यू चेंज हो रही है पर एलिमेंट नहीं चेंज हो रहा ना हमारा तो वो स्टैटिक ही हुआ ना okay let's make it simple now people pay attention how things are going to be worked okay tuple के बारे में let's revise till this particular point okay हमने बोला tuple list जैसा ही है but static है मतलब एक बार बनने के बाद चेंज नहीं हो सकता since tuple बनने के बाद चेंज नहीं हो सकता ये स्टिल वैलिड है बिकॉज मैंने tuple में चेंज नहीं किया मैंने tuple ही चेंज कर दिया तो ओवरराइट हो गया which is a valid thing पहला पॉइंट हमने बोला ठीक है सिंस टपल में तुम लोग चेंज नहीं कर सकते वी डोंट हैव एनी अदर मेथड देन टू अब दो मेथड्स हैं सिंपल है वी हैव इंडेक्स एंड काउंट मेथड बस उसमें ही काम हो रहा है ठीक है हम लोग ने कहा टपल को लिस्ट और इंडेक्स मेथड यानी कि ऑटो इटरेशन और नॉर्मल इंडेक्स बेस्ड इटरेशन कर सकते हो देन आई कम टू दिस पॉइंट अरे यार अब आप बोल रहे हो सर टपल के अंदर लिस्ट होगा फिर भी डायनामिक होगा ओके कंसीडर नाउ योर आंसर स्टार्ट्स इफ आई कंसीडर लेन ऑफ ए क्या आएगा 4 परफेक्ट अब पहली बात तो सर इसको ऐसे समझो 0 1 2 3 ओके So when I say A of 3 dot append, which is how list would be updated, I say 1 1 1 डालते चलो. So now my tuple has become 10, 20, 30, 11, 22, 33, 1 1 1 accepted. But my question still exists. What would be output of length of A? Anybody? 4 So you have your answer over there. 4 Sir, list will increase. But if we see number of elements in a tuple, they remain constant as 4. As list is one of the element, content of a list is
treat it separately when it comes to index 3. So it would not change in terms of number of elements. What would change is, even if it's a list size may increase or decrease, but nothing else. Okay, sir, itna lamba answer ho sunega. Okay, say this way, sir, even if list is dynamic, number of elements in tuple will not change. Even if list is dynamic, number of elements in tuple will not change. Will not change. Will not change. Number of elements will not change. Clear? Everybody clear? Any doubt? Any question? Ponda samjha? Clear. तो हम 10, 20 और 30 को भी रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही रहेगा ट्यूपल। I never said that. अगर वो होगा तो मैं स्टैटिक बोली क्यों रहा हूं? समझा? We are clearly saying कि एक लिस्ट होगा जो टपल के अंदर होगा, तो लिस्ट का कंटेंट मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने टपल के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, समझा? So you cannot, by any means, you cannot change 10, 20, 30, not allowed. 11, 22, 33 के साथ तेरे को जो करना है कर, because वो list है और list dynamic है. That's how it is. That's how it is. It's basically, we can say every structure has its own property. Even if you put it inside something, it won't lose its property. It will still remain what it is. ये एक basic fundamental. Clear out? यस सर। What is the benefit of having a list inside a tuple? If I want to send some data to the other side where there should be a surety that nobody changes it after I send it across, I might select the list to send data. Remaining information about the list will be hard coded, यानी टपल बना के मैं छोड़ दूंगा. So जो रीचेकिंग होता है, एरर चेक्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं या डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, टपल तो कोई चेंज नहीं करने वाला. जो भी होगा लिस्ट में अगर चेंज करे तो भी टपल का डेटा मुझे समझने में मदद करेगा that there has been some change, some update or some operations happening. Anything where I want to work with a static structure but with a variable size of info in it, this is considered to be a better option. Clear? Yes. Okay, so this is what we are talking about. This is how we are working with. इस basis पे सारा story चल रहा है, इस basis पे सारा concept चल रहा है. So this is how we are talking about. Tuple internally Python बहुत use करता है. ये बार-बार तुम लोग सुन रहे हो. But the question remains, sir, where do you think this is gonna? Most of the time, tuples are used with return statement of function. ये अलग से लिख के रखो, फंक्शन के टाइम में वापस दिखा दूंगा. नीचे लिख के रखो. Python returns more than one element in tuple. Python returns more than one element in a tuple. In a tuple. और हाईलाइट कर दो या स्टार दे दो. ये आगे क्लियर होगा कि क्यों स्टेटमेंट किया था मैंने. Okay. I feel everybody is clear with this. Working wise clear, simple है. So can you repeat that statement once again? Sorry for that. Okay. Python returns more than one element from the function using tuple. Yeah. Hello, sir. Yeah. Go ahead. I have a doubt, sir. Bola. Here we are using list inside tuple. Can we use reverse, that means tuple inside list? Yes, very much. All data structure are interoperable. So yes, we can have a tuple within a list within a tuple. Dictionary के अंदर multiple list या sets possible है.
all data structures are interoperable. Use ho na ho, that's a different story, but yes, you can use this very well, possible. But sir, tuple will be static there also in list also. Sorry, Tuple will be static there also in list also. याद है मैंने अभी स्टेटमेंट क्या बोला? Every data structure will not lose its property irrespective of कौन किसके अंदर है, because that has to be there, that is that property, so चेंज नहीं होगा. तो लिस्ट के अंदर भी टपल डालते हैं doesn't mean टपल डायनामिक बन जाएगा. No, it is gonna be as it is. It is gonna be as it is. It's like us human. See, हम लोग जो भी अपना प्रॉपर्टी है, जो जैसा भी है, वो वैसे ही रहेगा. उसको किसी भी सिचुएशन में डाल दो, हर एक के रिएक्शंस अलग अलग आएंगे, बिकॉज यू हैव योर ओन प्रॉपर्टी. सिमिलरली हर डेटा स्ट्रक्चर का अपना एक प्रॉपर्टी है. जब आप उसे नेस्टेड भी यूज करो या एक डेटा स्ट्रक्चर को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज करो, तो भी मेरे दोस्त डेटा स्ट्रक्चर अपना प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Thank you. Okay, guys. People, thumbs up if clear till this point. Because tuple पे इससे ज़्यादा time या investment में नहीं करने वाला. Okay, all clear? Any doubt? Yes, Any sir. question? Anybody wants to go through? चलो, I consider that silence as no. आगे जाते. ठीक है सर, tuple हो गया. हाँ, हो गया. अब आगे जाते. Now the next series after tuple is something which we love to operate on, love to work on, is concept of working with this, जिसे कहा जाता है in terms of working set. काफी important चीज है, याद रखना. सेट बनाने के लिए हाँ curly braces with the data और SET empty brackets यूज किया जाता है. स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ. सेट heterogeneous, yes. Dynamic, yes. Can insert, remove, yes. What it doesn't do, ये दो क्वेश्चन अगर दिमाग में है. नंबर 1, no duplicates. नंबर 2, no index access. No duplicates, no index access. No duplicates, no index access. Set array, तो no duplicates. Duplicate नहीं रख सकता. Plus no indexed access. ओहो, मतलब डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, इंडेक्स एक्सेस भी अलाउ नहीं करता. ये दो चीजें याद रखो. अगर बात किया जाए थर्ड पॉइंट का, which you should remember by now, इसका फिनोमेना था कस्टम ऑर्डर. ये डेटा को तुम्हारे हिसाब से नहीं रखेगा, कस्टम खुद के ऑर्डर के हिसाब से रखेगा. तो सर क्या तकलीफ है उसमें? भाई आधा मोह माया उधर ही आ जाएगा. क्योंकि अगर मैं हर एक चीज अपने हिसाब से रखूंगा तो इंडेक्स तो इम्पॉसिबल है. डू यू नो वेयर? यू डोंट नो, बिकॉज इट हैज इट्स ओन इंडेक्स. यू कैन वर्क. तो तुम्हारा इंडेक्स ऑफ गया, तुम्हारा ऑप्शन ऑफ एक्सेसिंग विद स्क्वायर ब्रैकेट गया. यू कैन नॉट डू दैट. तो पहले थोड़ा वो चीजें देख लेते हैं, बिकॉज दैट वुड बी नीडेड गोइंग बैक. So as we operate, guys, let me help you out. So as we work, as we operate, people please pay attention. तो जब आप बात करते हो सेट बना रहे, सॉरी. So 11, 22, 11, 33, 44. सर excuse me, sir. Duplicates not allowed. मैं नहीं सुनता किसी का. जा सर, बट नॉट अलाउड है ना. देखते ना, एरर तो नहीं दिया, बट स्टोर क्या किया वो भी देख लो. सो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड. कितना भी दो वो एरर नहीं देगा. बहुत अच्छा है वो पोलाइट ना. मैं बहुत बार बोलता हूँ टू माय सिस्टर, माय आंट इज बिट ऑर्थोडॉक्स इन टर्म्स ऑफ लिविंग. तो बहुत इश्यूज होते हैं विद द मॉडर्न जनरेशन हैविंग देयर ओन लाइफस्टाइल. देयर आर लॉट ऑफ क्लैश. और ये प्रोबेबली हम लोग के गैंग में रिबेलियस कैरेक्टर निकलता है ना, बोलता है मैं मेरा मन की करूंगी. बहुत क्लैश होते रहते हैं. एल्डर ब्रदर मतलब कॉल आता है सीधा, अमर तृष्णा ने के, तृष्णा को बोल कुछ. वो बहुत, मैं उसको सिर्फ मतलब देख, डू व्हाट यू फील इज राइट, बी रिस्पॉन्सिबल, बट आर्ग्यू मत करना. मुंडी हिलावर कर मत गवर्नमेंट की तरह. नहीं आम्ही करतोय, करेगा कब? बोले वैसे कर. सिमिलरली ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड हैपन इफ आई गिव
duplicate in set, will it give error or not? तभी it hits you in set. हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं एरर आएगा, फिर सर ने बोला था डुप्लीकेट नॉट अलाउड. डुप्लीकेट नॉट अलाउड का मतलब दो डुप्लीकेट या लेगा नहीं. याद करो. नो, दिस इज द इजीएस्ट वे. लाइफ को सिंपल करनी है ना, लर्न फ्रॉम इट गाइस. इट इज वेरी सिंपल. The best option you can work with, the best option you can operate with is do not do a lot of stuff. जो तुमको right लगे वो जरूर करो. But that doesn't mean go and argue with everybody. We are not freedom fighters. हम लोग क्रांतिकारी लोग नहीं है जो बोलेंगे नहीं मैं नहीं करेगा, नो ई नॉट सॉल्व, खड़े मत हो जाओ, चुप बैठो, यू नो, शांत. Do what you feel is right. बाकी के टाइम आर्ग्यू मत करो. तो नीचे बोल्ड में लिख लो, no error generated if duplicates given. No error generated if duplicates given. No error generated, duplicates given. खास याद रखना. सर वो लिस्ट भी ऑटोमेटिक सॉर्ट करते हैं? नहीं, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा. रुक, there are few things. Be quick, be quick, people. Okay. Now as we work with, हम लोग ये तो बात कर लेते हैं. चलो सेट का, सेट वर्क करेगा, सेट ऑपरेट करेगा. जस्ट अ मिनट गाइस. Okay. So as we are talking about, thank you. As we are talking about operation wise, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो concept पे बात कर रहे हैं, set duplicate नहीं लेता, मैं मानता हूँ. Order as the question was, ये यहाँ पे ना ये थोड़ा गवर्नमेंट जैसा मस्त चीज किया है. अगर S को डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो ऑर्डर डिस्प्ले होगा, ऑर्डर्ड डिस्प्ले होगा. जब उसे प्रिंट करोगे तो सीक्वेंस कस्टम होगा. सर वापस बोलो. नहीं बोलता, देख लो, जोक सपाट देख लो. सो एज अभी जो इसने बोला बहुत क्वेश्चन बराबर था. सर मतलब ऑर्डर लगता है ना, देखो कुछ फर्क दिखा है. एनीबॉडी कैन स्पॉट द डिफरेंस. क्या फर्क पड़ा? चेंज हो गए. परफेक्ट. तो ये खास याद रखना, ये खास याद रखना. जब हम टारगेट करेंगे, जस्ट अब टारगेट करोगे तो स्ट्रेट अवे जो एस है वो तुम लोग को ऑर्डर दिखाएगा. ये पाइथन का स्पेशलिटी नहीं है, ये कोलैब और जुपिटर बुक का स्पेशलिटी होगा. मतलब दे गिव यू ऑर्डर एक्सेस ऑफ अ सेट. इंटरनली पाइथन डजंट हैव एनीथिंग. वो हाथ ऊपर कर देता है, ये बाबा मेरे को कोई लेना देना नहीं है इससे. एक्चुअल में सर सेट कैसे स्टोर हो रहा है? कांग्रेट्स, दिस इज एक्चुअल वे ऑफ स्टोरिंग. याद रखना इंटरनली कि भाई ये अपने आइडियलीज है या आईडीज है जिन्होंने ये फीचर रखा है कि सेट को ऑर्डर में डिस्प्ले किया जाता है. बट एक्चुअल में जब पाइथन को बोला जाता है प्रिंट कर, तो वो ओरिजिनल जो जितना जैसा है वो उसको वैसा ही देगा. रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली. ओके, everybody clear with this? No option, no issues, all clean, all clear. Okay, so next going further, next talking further to this. ठीक है सर, मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे सेट का बात करेंगे. Now when it comes to set also has its own methods, but उसमें सबसे common method अपने काम का है add. Add will allow me to add data to set. Now if I add a new value,
it would gladly accept it. It would gladly accept it. Where? That's one good question. I don't know. जरा मजा देखो. 200 मैंने अब भी दिया. वो दिखा रहा है 200 को ऑर्डर में एंड में. मेरे को कोई तकलीफ नहीं है भाई. But मेरे दोस्त, if you realize जब नीचे प्रिंट करने जाओ, as that time you will realize कि वो तो अलग ही जगह पे. मतलब it is not necessary end में insert करेगा, start में insert करेगा. It totally depends on the way it is gonna work with, the way it is gonna operate with. So be very careful when it comes to it. Be very careful when we use this. So this is the phenomena जिसका आप बात कर रहे. This is a phenomena जिस पे आप चल रहे. So make it a point that you get that. Make it a point that you operate on that. Okay. Remove works with the similar way. When I say remove 11, it will simply remove it and keep it. अब एक logical question आता है. Think and answer, guys. Do you think pop will work in this? Yes, no. 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 No, sir. No, sir. Okay. So pop में ऐसी जबरदस्ती में डाल 33. But when I say pop 2, again interview question याद रखना. Normal pop works. Pop with index does not work. लिख लो. Normal pop works, but pop with index will not work. Normal pop will work, but pop with index will not work. अब उसमें और एक छोटा सा ट्विस्ट है दोस्त. सर क्या? नॉर्मल पॉप चलेगा, क्या बाहर आएगा उसका गारंटी ना आप ले सकते हो ना मैं ले सकता हूँ. रीजन भाई मेरे को तो ऑर्डर का ही क्लियरेंस नहीं है. मुझे नहीं मालूम ये कैसे, कहाँ, क्यों, कैसे स्टोर कर रहा है. सो मैं क्या बोलूं तेरे को उस बारे में. इट इज लाइक टेलिंग समबडी मेरे को नहीं पता. आई डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द लॉजिक इज सिमिलर. पॉप चलेगा but I cannot guarantee what would come out. So be very careful when it comes to this. ठीक है यार, चलेगा चलो. क्या करें? आगे जाते हैं. Okay. Now, people pay attention to the next. अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, we are now talking about सेट के 4 सबसे बेसिक और सबसे काम के ऑपरेशन जिस पे हम लोग काफी हद तक फिल्टरेशन करते हैं. तो सेट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है डुप्लीकेट ना होना. ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. मैंने दिखा दिया है एक मेथड जहाँ पे आपने सिर्फ सेट यूज करके सारे डुप्लीकेट्स उड़ा दिए थे and you only took unique elements, and that is the beauty of set. That is the beauty of set. Set 4 basic operations को support करता है. If I say 1, 2, 3, 4, 5, 6, set A, set B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait. And this is not going to change. I'm going to change is the operation in there. So bear with me. We will be working with this operations coming into picture. चलो. अब अगर बात किया जाए union. Union says everything taken, but repeat मत करना. So 1, 2, 3, 4, 5 is a union. सब ले लिया एक साथ. Then there is obviously intersection. So intersection. What are we working? Simple, my dear. 3, 4. So 3, 4 which we work with, 3, 4 which we operate with. Then there is symmetric difference. ये कभी कभार हम लोग को लेना पड़ता है. So symmetric difference be uncommon only. Ulta of intersection. We have 1, 2, 5, and 6. Different than this. And obviously, then there is a concept of difference.
अब कौन किससे डिफरेंस है? अगर a माइनस बी बोलो या b माइनस ए बोलो, a से b का हिस्सा हट जाएगा, b से a का हिस्सा हट जाएगा. Now there are three symbols which should be ready: and, or, and symmetric difference. 5 symbol. The and symbol for interaction, emphasis, and the caret symbol for the difference. इसका आप बात करो. That's something which you should be really prepared with, something which you should be really operating on. So be very, very careful when it comes to this. Be prepared, be ready. But sir, okay, एक बार करके देखते हैं क्या? As you can see, few people are copying. So चलो, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से कॉपी कर लो. Then I'll get my coffee. Okay. I hope people are done copying. अब बात करते हैं चलो practical का. ये तो बोल दिया यार, ये ऐसे चलता है. But now the obvious question is we need to try these things on. So let's try going for it. So going down, let's work with 2 sets बना देते हैं. 1, 2, 3, 4. Done. A is done. B बना देते हैं. So now we clearly know symbols as such. A and B हम लोग को लगता है यूनियन होगा, but जरा संभाल के ये इंटरसेक्ट करता है. Things which are common in A and B. A और B is a union. यानी कि A और B दोनों में जो भी है 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. एंड फिर हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कैरेट सिंबल, या जैसे हम लोग XOR वाला सिंबल बोलते हैं, वो सिमेट्रिक डिफरेंस लाता है. एंड देन इट मेक्स इट वेरी वेरी सिंपल इन लाइफ. भाई A माइनस B, A में से B हटा देगा तो B माइनस A, B में से A हटा देगा. That's very simple of us to use and operate. Simple. Now the major question starts. सर ये इंडेक्स एक्सेस नहीं देता आपने, बराबर. So sir, one good question to operate or one this good question to ask is, अगर ये इंडेक्स एक्सेस नहीं देता, प्रोसेस नहीं कर सकता, तो एक क्वेश्चन है, क्या I mean, why are we so much enthused about using it? The biggest strength which we have working with this, the biggest option which we have working with this is a concept. The concept जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं operation on different thing using set. पर ये सारे terms हटा दो.
Getting unique data, filtration, that's the use of set. नीचे लिख के रखो. Getting unique data is the biggest strength of a set. तो filtration सबसे बड़ा strength होता है, filtration सबसे बड़ा ताकत बनता है तुम लोग का. So unique data अगर चाहिए तो you just need to put it under set, तो तुम्हारा काम हो जाएगा. Put it under set, तुम्हारा काम हो जाएगा. That is how we work with, that is how we operate with it. So be very, very careful when it comes to it. Be very, very careful when you come to the operation part of it. हम लोग के पास ये स्ट्रेंथ बचता है, हम लोग के पास ये स्ट्रेंथ होता है कि हम लोग इस तरह से इसे ऑपरेट कर पाए. Everybody clear with this? फंडा समझो. ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग एक बार देख लो, बिकॉज तभी तुमने विथ रेफरेंस टू लिस्ट समझा था, अब विथ रेफरेंस टू सेट समझो. कंसिडर आई हैव ए लिस्ट जहां पे यूजर ने मुझे बहुत सारा डेटा डाला है, उसमें बहुत सारा डेटा डुप्लीकेटेड है. बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा है. I want to just remove all duplicate. The best option I can do is put a list inside a set and sorry, and then work with it. तुम्हारा काम हो जाएगा. ये खास याद रखना. This is the easiest way to get unique data. Let it be numbers, let it be any other thing. But unique data निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है. Okay. बट सर इसके ऑर्डर की तो बैंड बजी रहेगी ना एक्चुअल में. हाँ, इफ आई से एज यू कैन सी, नॉट एट ऑल. बट सर पहले जैसा चाहिए तो नेस्टिंग ऑफ मेथड इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच यू शुड बी रेडी विथ नाउ. सबसे पहले सोच समझ के आंसर दो. द आउटपुट वुड बी लिस्ट, टपल और सेट. लिस्ट, टपल और सेट आउटपुट क्या होगा? सेट तो नहीं होगा. लिस्ट होगा, सेट होगा, टपल. सेट नहीं होगा, बराबर सेट होगा. लिस्ट सर. टपल सॉर्टेड ऑलवेज वर्क विद लिस्ट ओनली. ध्यान से देखो ब्रैकेट्स. सर क्या किया आपने? लिस्ट था, उसको सेट में कन्वर्ट किया, बट सॉर्टेड रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट, ये याद रखना. सॉर्टेड रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट. तो ये वापस खुद ब खुद गिवन डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट करके तुमने ऑपरेट कर दिया. तो मैंने दो स्टेजेस लिए. स्टेज 1 ए लिस्ट सेट converted to a sorted list. That is how we operate, that is how we work with, that is how we used it. So this is a concept जिसका आप बात कर रहे हो, this is a concept जिस पे आप work कर रहे हो. So this is how we work and operate with the entire stuff. Clear? Everybody clear with this? फंडा समझा? हाँ ना? लॉजिक समझा? सर इसमें सॉर्ट यूज कर सकते हैं? सॉरी, सॉर्ट यूज कर सकते हैं इसमें? as if set में नहीं है, but अगर if you to convert to list then sort we can use. नहीं मतलब स्पेसिफिकली मैं अगर लिस्ट को सॉर्ट लिखा तो एरर आएगा क्या? लिस्ट को सॉर्ट करेगा तो कभी एरर नहीं आएगा. लिस्ट में तो बिल्ट इन मेथड है दोस्त. ओके. Okay, so let's go further. So this is what we are talking about, this is what we are going through. So this is a set. Going next to the next data structure which we should be ready. Set समझ गया, टपल समझ गया. अब समथिंग which works in a quite different way. अगर जावा कभी पढ़ा होगा तो कलेक्शन में मैप नाम का एक चीज है, वही चीज अब अपने पास डिक्शनरी में. तो डिक्शनरी क्या है और अजीबोगरीब नाम क्यों? What is the use of dictionary in real life? It's very simple, sir. हर वर्ड का एक मीनिंग होता है. No, I have some of my friends who are exponentially great in terms of English vocab. एक तो नॉवेलिस्ट है मैडम, एक दूसरा बंदा बेचारा नो फिलोसॉफी और बहुत सारे काम करता है वो तो, बट इज इनटू इंग्लिश मोर और लेस. उन लोग का नॉर्मल इंग्लिश भी ऐसा लगता है ना कि कोई सेल्फ हेल्प का हम लोग नॉवेल पढ़ रहे हैं. व्हेन दे विल यूज सम वर्ड, और मैं ठहरा टेक्निकल आदमी तो उन लोग के साथ बैठा रहेगा. भाई न्यू वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग? क्या अमर बोले भाई देख, मैं ऐसे ऐसे टर्म्स बोल सकता हूँ इंजीनियरिंग के जो तेरे को समझेगा नहीं, तो ऐसे तो इंग्लिश के बोल. So they come with their own flavors, own way of speaking. The concept is by dictionary. बहुत बार नहीं होता कि
कुछ लोग इतना हाई फंडू इंग्लिश अननेसेसरी वर्ड्स बोल देते हैं कि तुम लोग को मन में होता है अला डिक्शनरी लेकर बैठ रहे हो, तीसरा वर्ड का मीनिंग ढूंढ क्या है. This happens, more or less it happens. That's the reason I always feel that sticking to English is a good option. Using spoken English is 10 times better than giving English with a touch of no. Aajkal if you go to Reels or if you go to probably Facebook, हर कोई English का पंडित बन चुका है. You know, say this, no, say this. कोई cartoon है, I mean, कोई female है, she says, better word for saying this, and then she will go on ta 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 ta. Good. Do we require that much? Do we require that much for communication? It depends what your field is. So मेरा logic भी वही बोलता है भाई dictionary क्यों? Because dictionary में सर हम लोग को इतना समझा, हर एक का word होता है और उसका meaning होता है. अब यहाँ पे अपने पास है की और तो जिस तरह से डिक्शनरी में हम लोग एक वर्ड लेके उसका मीनिंग ढूंढते थे, यहाँ पे भी वही करना है, बट हम लोग की एक्सेस पे. तो एक डिक्शनरी बनाने के लिए याद रखना, ऑर्डर would be on basis of key. You cannot have duplicate. No duplicates allowed. No duplicate allowed. नहीं सर, मैं सुनता नहीं है किसी का, मैंने दिया तो. If old key reused, this is called update in this case. I'll explain each term now. Access, give key as index and have value as access. Oh. No matter आपके माँ बाप ने प्यार से जो भी आपको नाम, what is your identity in Viva? याद करो engineering और याद करो तुम्हारा normal syllabus. What is your so-called identity? Roll number 1, 2, 3. It works in very simple way. वो बाद में देखा जाता है रोल नंबर 1 किसका है, रोल नंबर 2 किसका है. No, you are still at a student level. I have been through at a faculty, senior faculty and all. मजा आता है. ये जब वाइवा के लिए जाता है ना, तुमको लगता है एक्सटर्नल आके बेचारा इवैल्यूएट करता है और मार्क्स देता है. There are very few organizations which gives you that liberty. Most of the time they do try to influence. अंदर बैठो अगर no, this I remember ये ऐसे होता है. So the next group में जो आएगा ना, वो लड़का है या लड़की ना, स्कॉलर है, हम लोग का टॉपर है. अब उसके बाद बेचारा एक्सटर्नल समझ नहीं पाता, मतलब क्या करूं, उसे उस तरह से ग्रिल करूं कि भाई टॉपर है तो दिखा क्या आता है, या मार्क्स देना है. या बहुत बार तो आई रिमेम्बर मुझे बोला जाता था, सर नेक्स्ट बैच में ना ये रोल नंबर आएगा, बहुत कमीना, बहुत सता है, बराबर बैंड बजा. So it depends. Come on, when we are taking a viva, we know how things are going to be played. I know what exactly cards to play. सामने वाले को अगर सताना है या सामने वाले को देखना है, तो I know which cards to play, and we used to play also. No, but मेरे एक आदत होता था कि मैं खास करके इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैं पेंसिल से मार्क्स लिखता था मेरे इवैल्यूएशन के हिसाब से, नीचे पेन से साइन करता था और मैम सर को पकड़ा देता था, मतलब ये लो डू व्हाटएवर यू वांट. रीजन थी, बहुत बार ये होता है ना, वाइवा इज आल्सो अबाउट बैड लक. तुमको पूरे सिलेबस में वही 3 टॉपिक्स नहीं आते थे जो मैंने पूछा. आई कैन नॉट एक्चुअली इवैल्यूएट ऑन दैट बेसिस कि मे बी यू समबडी इज अ रियली गुड स्टूडेंट, और उसको वही 3 टॉपिक नहीं आए जो 3 टॉपिक मैंने उसको पूछा, एंड देन आई रियली कांट जज. ये तो यहाँ पे अच्छा है कि वाइवा लेने मिलते हैं वेयर आई हैव अ फ्री हैंड. तो मुझे अगर डाउट आया कि भाई शायद इसको ये नहीं आता, तो मैं, और यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, व्हेन आई टेक अ वाइवा आई नो मैंने क्या सीखा है, तो आई नो व्हाट क्वेश्चंस आई एम गोना फ्रेम, और वो भी नहीं आया तो मेरे लिए इवैल्यूएशन बहुत इजी है. अब यहाँ पे आई रिमेम्बर बहुत बार होता था कॉलेजेस में, तो पीपल यूज्ड टू नो, फैकल्टी का इज्जत निकालना तुम लोग को सबसे मजा आता है. जब मैं पूछता था क्वेश्चन नहीं सीखा, पब्लिक ऐसा फैकल्टी के तरफ से नहीं सीखा है इन्होंने, एंड मैं ऐसे हंस के देखता था, नहीं सर सीखा है, वो फैकल्टी ने सिखाया हो ना, वो फालतू में चढ़ेगा. क्या वो 100 मंथ में 100 लेक्चर में तो मैंने सिखाया था, कुछ भी तुम प्रेजेंट नहीं थे. ठीक है, बट द फिनोमेना इज दिस, every value would have certain key. Key is where we will be using access. जैसे मैं रोल नंबर बोलूं, रोल नंबर 4 has to be so and so.
यूनिक होना चाहिए. कीज कैन बी हेट्रोजेनस बट यूनिक. की कैन बी हेट्रोजेनस बट यूनिक. तो सर मतलब दोनों हेट्रोजेनस होगा या सिर्फ की? ना 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 ना, हेट्रोजेनस दोनों हो सकते हैं. की भी हेट्रोजेनस है, वैल्यू भी हेट्रोजेनस है, बट की का यूनिक होना अनिवार्य है. अगर वही की वापस यूज करोगे अपडेट होगा, वही की वापस यूज करोगे तो मेरे दोस्त अपडेट होगा. दैट इज हाउ वी पुट इट, दैट इज हाउ वी ऑपरेट विद इट, दैट इज व्हाट यू विल बी वर्किंग. पीपल, नाउ जस्ट टू सी दिस, मैं एक डी डिक्शनरी बना रहा हूं. ऐसे 1 1, ऐसे 2 TW2, ऐसे 3 3. We can go on throughout, but बस 1 2 3. मतलब सर आपने 3 डेटा दिया, 3 का की दिया. इसको एक्सेस के लिए तुमको वैल्यू की यूज करना पड़ेगा. सपोज ऐसे 2, as you can see उसने immediately वैल्यू निकाल के दिया. So that will get me to. So it's a key based access. तुम की दो, मैं वैल्यू दूंगा. अब मालूम पड़ा मैंने क्यों तुमको एग्जांपल दिया तुम लोग के खुद के वाइवास का. तुम्हारा जो भी नाम है वाइवा में याद है, हम लोग अपने रोल नंबर से इतना प्यार कभी नहीं करते, जब वाइवा होता है तभी सबसे ज्यादा याद आता है. क्यों? पता चला मेहनत मेरा और मार्क किसी और को मिला तो वी से राइट अंदर जाके रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, उसके मार्क्स मेरे को मत देना, ढ है वो. So the logic is very very simple. Your access is through the key. Now, sir वो आपने बोला है if key used again will be update. उसका मतलब बोलो ना. अगर मैं ऐसे डालू, now watch it carefully people. अगर मैं ये डालू तो सर क्या होगा? This is adding data to the dictionary. So now dictionary has 1 2 3 4, 1 2 3 4. Make sense? की ऑर्डर के हिसाब से. सर क्या क्या क्या? की ऑर्डर के हिसाब से. जरा ध्यान से देखो. ओके, तो इफ आई से डी ऑफ 1.5, डेढ़ बोला जाता है ना हिंदी में शायद. दिस आई नेवर अंडरस्टूड. किसने ये इन्वेंट किया? मैं आज भी, माय मॉम लाफ्स ऑन मी कि मैं बोलता है 12:30 1:30, इट्स द इंग्लिश बेटर है. हिंदी में आता है तो मैं तो बोलता है 12:30 1:30 2:30 एंड 3:30. देन दे लाफ, क्या 1:30 2:30? बोलो भाई ये 1:30 और 2:30 मेरे दिमाग में नहीं आता. बहुत बार मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ. तो मैं बोला क्या किसने बनाया? इंसानों ने बनाया ना, तो छोड़ो. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऊपर देखो, कुछ दिखा कुछ समझा. क्या हुआ? इफ यू सॉ 1 देन 2, 1.5 ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला गया, बीच में चला गया. यानी कि अब मालूम पड़ा व्हाट आई मीन बाय की ऑर्डर. की वुड डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस. की वुड डिसाइड द ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस. क्योंकि एक्सेस तो की पे ही होने वाला है मेरे दोस्त. डोंट फॉरगेट, एक्सेस तो की पे ही होने वाला है मेरे दोस्त. इसको जनरली हम लोग इटरेशंस में नहीं यूज करते, इसे डायरेक्टली एक्सेस के लिए यूज होता है, डायरेक्टली एक्सेस के लिए ऑपरेट होता है. अब वापस आई गो बैक टू द पॉइंट व्हिच वी वर डिस्कसिंग. सर मतलब 1 1.5 2 3 4 सब है. सर what would happen if I do 3? सर ये ऑलरेडी है ना, बट मैं रन करेगा तो ये तुमको लगता है ऐड होगा? नहीं, ये अपडेट होगा. ध्यान से देखो अपडेट ने क्या किया. 3 was a key, so THREE 3 went off and that became 3. This is why I said if you reuse the key, that will be update, not the addition. That will be update, not the addition. That is what we are trying to say. That is what we are trying to operate. Everybody clear with this? Funda samjha? Logic samjha? So this is basically dictionary. Now dictionary से related एक question आता है which I love to give. Think and work with it. ये तुम लोग करोगे. I'll give you 5 minutes for doing it. पहले question सुन लो, थोड़ा interesting है. Question समझ लो, थोड़ा interesting है. So people, please make it a call. अब ये क्या क्यों कैसे? Watch it carefully. People, watch it carefully. Sir किस चीज का बात करें? Okay. Implement switch case structure
to print A inwards starting from one as Monday. सर एक मिनट क्वेश्चन का फील लेने दो. अब जैसे ही ये स्टूडेंट को इंटरव्यू में आता है ना, स्टूडेंट आई हैव सीन दिस पर्सनली. स्टूडेंट सर देयर इज सम मिस्टेक इन क्वेश्चन. इन पाइथन वी डोंट हैव स्विच केस. पढ़ो आप क्या बोला. implement switch case structure. क्यों? मतलब what they want is very simple guys. 2 दो तो Tuesday दिखना चाहिए. Similarly 4 3 दो Wednesday, 4 दो Thursday and so on. But why they said switch case structure? You are not going to use if day is equal to 1, it is Monday. नहीं, ये सब मैं नहीं कर रहा. अब मेरा सिखाने का सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन का कोई तो रीजन होगा. दिमाग लगा, वेटिंग, ये तुम लोग करोगे. सो गिव यू 5 minutes फॉर दिस. आई डोंट थिंक उससे ज्यादा टाइम लगना चाहिए. यू गाइस आर वंडरफुल पीपल. सो डू दैट. डू दैट पीपल. बी क्विक. Good. Good, Dheeraj. Smart move. Good job. Just a छोटा सा advice है Dheeraj. Whenever you implement, try to use variables which you can relate to. ABCD is considered to be the bad programming. जैसे कि अगर बना रहा है तो you can say for example day dictionary or day list would do. जब नीचे B ले रहा है उसके जगह पे mention day into this. So हम लोग इसे readability quotient बोलते हैं. तो आजकल ये इंडस्ट्री का CMM लेवल 5 है ना, वो कंपनी में readability quotient एक काफी important term हो गया है. So even when I take we take 1 day training just for teaching people how to write readable codes. उसमें से एक फंडा है कि variables वही use करो which you can relate. Okay? Otherwise concept बहुत बढ़िया आप कोड किए. Good job. Okay sir, thank you.
So चलो एक ने तो कर भी दिया, अभी भी 1.5 मिनट है तुम लोग के पास. So very simple concept and nothing much to do. 3 लाइन का कोड है, डिक्शनरी बनाओ, दे लो और खत्म करो. End of the story. Wow. Now this is a more interesting thing to say. Jeet has given the code very well handled. Day variable 1 taken from the user. We can do that. Super. Okay, Jaraj, going through yours. Okay, if it is equal to, definitely not. Wrong code. Jaraj, when you have a dictionary, why you even want to check? हाँ, boundary check कर सकता है at the most 1 से 7 के बीच में है क्या? Otherwise, that is not needed. That if is not needed, you can directly work with it. Okay, so make it a point. Swati, okay. Pretty nicely done. Pretty nicely done. Good job in converting and working. Would do, my dear. Good. So कुछ लोगों ने तो अच्छे से दिया. Others can definitely start looking in the chat window because people are doing code and I'm loving that part. Good thing. Good thing. Very good. Okay. Okay. So love the fact that people have coded. People have worked with it. तो चलो लॉजिक बहुत सिंपल सा था. एक डिक्शनरी बनाओ का बैंड बजा दिया. कृष्णा बेटा क्या किया बेटा? बैंड बजा दिए प्रॉब्लम की. डिक्शनरी यूज करने का छोड़ के लिस्ट क्यों यूज कर रहा है मेरे भाई? डिक्शनरी इज द स्ट्रेंथ व्हिच वी हैव ना. सीधा एक ही बना, 2 क्यों बना रहा है लिस्ट? इट कैन वर्क इनटू सिंगल ना. सो चेंज कर. Others are on dot. Loving the way people have coded. Good to see. Sonali, good. Rahul, good. Okay, superbly done. Good job to work with. Chalo, time's up. Apna pari aya. So now, if you tend to go with it, हम लोग का लॉजिक कुछ इस तरह से होगा. ये भी स्टूडेंट का ही कोड मैंने कॉपी मारा है, ज्यादा कुछ नहीं. बहुत बढ़िया काम किया है. तो आई कैन से जस्ट रीफ्रेमिंग द वेरिएबल्स, नथिंग मच. डे एंटर, डे नंबर, जो डे आएगा वो डे पे आएगा और वो डिक्शनरी में नहीं आएगा दोस्त, डे लिस्ट में चला जाएगा. If I play with this, ये यूजर से एक डे लेगा, मैं बोलेगा 5, एंटर करो. So if वेरिएबल में कुछ गड़बड़ होगा, let me check. Key error. Just a minute. हाँ, because it has to be int. हम लोग ने int लिया है तो int work करना पड़ेगा. So be careful. So we'll be saying now again 5. If you say, we get Friday coming in 2. As simple as that. This would be a more proper answer. When somebody tells you in any interview, implement switch case in Python, remember Python by default does not have this. Python में switch case नहीं है. मैं टोटल मानता हूँ ये बात. But मेरे दोस्त एक चीज भूलना मत, Python में नहीं है. But if somebody asks you कि नहीं implement कर, indirectly they are telling you to utilize dictionary. Indirectly they are telling you to utilize dictionary. Do not forget this. Do not forget this. Be very careful. Dictionary is ultimately what they want you to use, but again they will not directly tell you. Okay, perfectly okay. So don't get confused. It's a very simple thing. हम लोग को सिर्फ एक स्ट्रक्चर रेडी करना है. स्विच केस स्ट्रक्चर ये डाला ही गया था तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए. Because until and unless you do that, you will never get an option to understand how things are worked. Never get an option to understand how things are operated. So that is what we work with. That's how you operate and work. Everybody clear with this? Simple funda, simple logic to play into picture. Okay. Again, one of the interview question, best of luck if you tend to say this. Out of 4 data structures of Python, which data structure will be used to implement contact list of your phone? People waiting. Out of 4 data structures of Python, which data structure will be used to implement contact list? Waiting. Tuple. डिक्शनरी. अगर मैं एक पर्टिकुलर, मेरा सीक्वेंस अभी तक तो आइडिया आ गया, मैं तभी मुंह खोलता हूँ जब मैं सिखा चुका हूँ.
So connection is dictionary. Why? So what would come as a primary key and what would come as a value? Name as a primary key, number is a value. number is value. Very good, sweet. Exact उल्टा बोला और यही तुम लोग इंटरव्यू में भी करते हो. मेरा नाक कटा हो गया. Number would be the primary key. क्यों? नंबर यूनिक है, नाम नहीं. नो जैसे हम लोग का ही डिस्कशन हो रहा है, शुभम यहाँ पे कम है, इसके बाद वाले बैच में तो शुभम कैसे है 1 डजन के हिसाब से हम लोग के पास. तो ट्राई टू डू दैट. तो शुभम इज नॉट यूनिक. इवन अमर भी इतना नो यूनिक नाम नहीं है, इसीलिए पब्लिक लोग नो आजकल वो अजीबोगरीब नाम होते हैं. सो आई हैव अ स्टूडेंट जिसका नाम तो अभी तक मेरे को समझा नहीं है, बट नो पीपल कॉल हर श्रेया. उसके माँ बाप ने उसका नाम लिया रखा है श्रेयांशिका. मैं ऐसे खाली सोच रहा हूँ व्हाट्स योर नेम? श्रेयांशिका. लो याशिका सुना था, श्रेया सुना था, ये कुछ हाइब्रिड बन गई है. बट ठीक है, दैट इज द रीजन नो पीपल नाउ ट्राई टू सर्च फॉर यूनिक नेम्स. यूनिक नो उसमें यूनिक में मस्ती भी होता है. आई हैव माय ब्रदर जिसको 5 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था, उसके बाद बेटा हुआ एंड उसने उसका नाम रखा विनोद. आई मीन आई फाइंड इट वेरी फनी. वो आज भी मुझे उस नाम के लिए गाली देता है. बोलो डू यू फाइंड इट, यू डोंट फाइंड इट फनी ब्रो? मुझे लग क्या, मुझे 5 साल तक बेटा नहीं. वी नो हाउ मच स्ट्रगल यू एंड भाभी हैज डन. You got a son and you call it Vinod. That means I mean I can actually ask you 5 years you guys were joking. बोलते अमर, बोला I can't help it यार, तू नाम ही ऐसा रखा है. तो अब जब भी मैं विनोद करके उसके घर पे जाता हूँ ना, मैं ऐसे चिल्लाता हूँ विनोद हाउ आर यू, मतलब गालियां देना चालू कर देता है मुझे. बट कांट हेल्प इट. पब्लिक सोच के नहीं रखता क्या पता नहीं. बट छोड़ दो. कमिंग बैक टू द स्टोरी. इवॉन मस्त ओके के बेटे का नाम है विनोद या विनोद, क्या नाम है उसका, व्हाटएवर. No, I don't know. I personally don't know those. So as we work with, as we operate with, these were the 4 structures. 4 structures of Python make it definitely powerful, but Python का ताकत अलग लेवल पे लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं अब concept of strings. अब string का अपना एक strength है, string का अपना एक logic है, जिस पे हम लोग बात करते हैं. Now, string makes it bigger, better and more powerful to work with. Dictionary में थोड़े example. Now dictionaries would work in a very simple manner. Anything with contact list, for example, जैसे मैंने कहा तुम लोग के फोन के अंदर ये मेंटेन किया जाता है. It comes अगर तुम में से कोई भी मेरा नंबर स्टोर करता है तो internally Android पे कुछ इस तरह से it would work. This is my number in terms of working. So इस तरह से सारे नंबर एक डिक्शनरी यानी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आते जाएंगे. So whenever I call you, you would receive a clip. So caller line identification इसे कहा जाता है. That's a service which government of India or rather government has given you on mobile. Clip send करेगा 9821601163. अब जब ये सेंड करेगा तभी तुमको अमर दिखाने का काम इंटरनली एड्रेस बुक से होगा. एक चीज मार्क करना, इसलिए मजा आता है. अगर तुमने एक ही नंबर 2 नाम से स्टोर किया तो एंड्रॉइड हाथ ऊपर कर देगा. एंड्रॉइड बोलता है भाई मुझे नहीं मालूम, तू देख ले, मैं सिर्फ नंबर दिखा रहा हूँ तुझे. व्हाई? बिकॉज इट वुड नॉट बी एबल टू प्लेस इट प्रॉपरली. यूनिकनेस चला जाएगा. सो दैट क्रिएट. अब तो अच्छा है, अब जगह नंबर भी तुम रखो और सेव करो, उससे पहले ही तुमको दिखा देता है ये नाम से भाई नंबर है, क्या करूँ, वही सेव करना है कुछ और करना है. सो दिस इज व्हाट वी वर्क विद. डिक्शनरी के छोटे छोटे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. वी कैन इवन हैव प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग डिक्शनरी, जहाँ पे एक एक लाइन में क्या करना है वो हम लोग डिक्शनरी के साथ वर्क कर सकते हैं. और यू कैन वर्क विद मैपिंग ऑफ डेटा. सर मतलब बहुत बार रिजल्ट्स के लिए हम लोग, जिसमें मैं बहुत प्रिसाइजली स्केल का बात कर सकता हूँ कि चलो एक कोई टेस्ट था, ब्लड टेस्ट था सपोज, उसमें 3 कैटेगरी था. दिस वाज ओके, this needs investigation, this is serious, or this can be anything in a medical terms. तो जो टेस्ट का मैपिंग होता है वो भी हम लोग इस पे करते हैं कि जो डेटा आया उस हिसाब से टेस्ट में क्या बोलना है, कैसे वर्क करना है. तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल इन डिक्शनरी कि हम लोग इस तरह से कोड करके रखते हैं कि भाई ये एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ and so on. So dictionaries will be used wherever you require mapping. कुछ जगहों पे डिक्शनरी का यूज, कुछ जगहों पे डिक्शनरी का यूज इवन रिजल्ट एनालिसिस के लिए भी किया जाता है कि अगर ये रिजल्ट आया तो ये बोलना होगा, ये रिजल्ट आया तो ये बोलना होगा. So these are many small examples where dictionary can be used,
But yes, this is how we will be operating and working with it. So everybody clear? Any doubt? Any questions? Sir, I had one. Yeah. Can we store multiple data on a single key? So, matlab, if one is my key, I can store Monday, Tuesday, Friday on that particular key. Then you have to use as a nested phenomena कि तुझे एक list बनाना पड़ेगा और store करना पड़ेगा. That is very much possible. आप ऐसे कर सकते हो. Maybe I say one. No, let's say one, and then I will be storing this way. Monday, Tuesday, and whatever. मैं इस पे close कर रहा हूँ. The second option is then you will go with maybe what? Wednesday, Thursday. ऐसे कर सकता है. Nobody stops you. And so on. तो उसको एक्सेस कैसे करना पड़ेगा? Sorry? एक्सेस करने के लिए if I want एक्सेस करने के लिए तो की ही होगा. की से डेटा मिलेगा. डेटा के अंदर जाने के लिए फिर तुझे इंडेक्सिंग ऑफ लिस्ट यूज करना पड़ेगा. क्लियर? Yes. क्योंकि देख अगर कंसिडर दिस क्वेश्चन, अगर मैं इसे नो ऑप्शन बोलूं, ऑप्शन करके इसको नाम देता हूं, तो व्हेन आई से अमर दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1, तो अल्टीमेटली दिस विल गिव मी मंडे एंड ट्यूसडे, but to access them I would be then accessing through index, so 0 and 1 obviously, but then it is again list. तो पहले तुझे इस डेटा को लिस्टिंग पे लाना पड़ेगा और फिर उसका इंडेक्सिंग यूज करना पड़ेगा. वेरी मच पॉसिबल. या अगर डायरेक्टली एक्सेस करने का बात करें तो वो नेस्टिंग पे चला जाता है, जहां पे कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, ऑप्शन ऑफ 1 का 0 would give me Monday. Okay. ये तोड़ सकते हो. We advise not to, but again you can do that. Yes. Clear? Yes. Okay. So this is where the first half of your data structure stops, and the second more interesting stuff will start. That is talking about string. अब string काफी हद तक एक अलग phenomena है, अलग logic पे चलता है. And the most important thing, clearly पहला line mention करो. String is not a data structure. बहुत सारे book, बहुत सारे authors, बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के string is a part of a data structure. No, it's a primitive data type in Python. It's a primitive data type. String बोलते हैं, लिखते नहीं है. तो मतलब Python does not have string. It calls it str. याद रखना ये. Python does not have string. It calls it str. Now, one of the interview round where one of the student was asked, and that was quite interesting thing. What character set Python follows? वो बंदा इंग्लिश बोल गया था, वो बात अलग है. And my student coming and telling, sir English. मेहरबानी करके be careful. So what character set it follows? Just a minute, people. Monday mornings.
Okay, sorry guys. So as I was saying, what character set Python follows? उसके लिए पहला तो बोलो what are the character sets available? Guys, what character sets are available? सुना है इसके बारे में किसी ने? Yes, sir. सी जैसे लैंग्वेज जो खाली इंग्लिश को सपोर्ट करते थे भैया, वो चलते थे आस्काई पे. आस्काई इज अ सबसेट ऑफ अ यूनिकोड. जावा, पाइथन and many new languages are working on Unicode. तर फर्क क्या है? एक 8 बिट का, एक 16 बिट का. Now, the bigger difference to realize, or the bigger thing which you should put into head is, दोस्त ये सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात कर, ये 24 लैंग्वेजेस के बारे में. So you mean to say कि Python use करके तुम ऑपरेट कर सकते हो बाकी के? Yes, very much you can operate on. Very much you can. 24 languages में आप कोड सकते हो. तो याद रखना, if somebody asks you what Python follows, it follows Unicode, which is 16-bit. ASCII जिन्हें question है, sir, ASCII क्या है? American Standard Code for Information Interchange is ASCII. American Standard Code for Information Interchange. ASCII Unicode. याद रखना ये. ASCII Unicode. याद रखिएगा please. Okay. Clear with this? ये लिख के रखो आगे का. I was about to say break, don't worry. So we'll be taking break after this. Next around 15 minutes, my watch shows 37. Let's make it a round figure, 40. 15 minutes. We would be starting at 55 in that case. Okay. So chalo, 40 se 55. That would be our thing. Chalo. Bye guys. As usual, I'll remain in this, but you guys take a break. Cameras burn kar.